तभी तुम समझा पाओगे और तुम्हें समझ में भी आएगा तुम कर क्या रहे हो। वरना सिर्फ इंपोर्ट लाइब्रेरीज करते रहोगे तो फिर एक ना एक बार, हाँ, एक ना एक पॉइंट बट यू विल बी स्टक. like if data is there in front of you, if you are using a regression model, so why you are using a regression model? If you're asking for something that is specific, then for some of the general tools is Power BI, Tableau for data visualization. तो मैंने भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स चालू किया था. सो मेरे को लाइक बीच में उतना इंटरेस्ट आ तो नहीं रहा था, बट आई वाज स्टिल लाइक एक आधा कोर्स कर लिया तो फिर पूरा कोर्स कर ही लेते हैं. हम्म. सो हेलो हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद शशांक और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डेटा साइंस के बारे में और डेटा फील्ड में स्पेसिफिकली काफी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्रिस्प एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ शशांक के. So, hi Anurag, thank you so much for having me. And I did my engineering in computer science from KJ Somaiya College of Engineering, which is in Mumbai. And during my engineering, I explored a lot of fields and did quite a few internships in the field of data science itself. And currently, I'm working in CRISIL as an associate in the field of data science only. ओके ओके ओके, दैट वाज अ गुड जर्नी. सो इसमें हम थोड़ा डीप डाइव होते हैं और स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा, दैट इज कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट आपके लाइफ में रहा है अबाउट द डिसीजंस, हाउ यू शेप्ड योर करियर आफ्टर द ग्रेजुएशन, हाउ वाज योर जर्नी? So after the graduation, what happened was अभी तो like recession वगैरह चालू हो गया था by the time I graduated, and बहुत सारी companies का onboarding delay हो गया था, and I was also one of them. मेरा भी onboarding delay हो गया था. And what happened, like I was already doing an internship during that time, and मेरे को like I was expecting a PPO over there, but again because of recession and it was a US company especially, so मेरा PPO actually reject हो गया. So I was about to graduate, मेरे पास पीपीओ भी नहीं था जो इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा था मैं. एंड ऑन कैंपस में जो था वो भी ऑनबोर्डिंग डिले कर दिया था अराउंड अक्टूबर या फिर लाइक अक्टूबर नवंबर के आसपास ज्वाइनिंग बोल रहा था वो. सो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम आई वाज टोटली कंफ्यूज कि क्या करना है मुझे. माय फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड देयर जॉब एंड एवरीथिंग. So that's when I realized that, like, I just asked my manager if he can at least, extend the internship. I'll side by side start for searching for full-time job. And by the time my on-campus company starts, if I find any other job, I will, just join that, or else at least internship to continue रहेगा. वरना I will be just jobless sitting at home. फिर क्या हुआ, मैंने बहुत सारा कोल्ड मैसेजेस सेंड करना चालू किया था. उसके पहले तो मैं कभी कुछ ऐसा लिंक्डइन पे एक्टिव भी नहीं था. अगर कुछ इंटर्नशिप चालू हुआ तो बस वो डालता था कि आई जॉइन सो एंड सो कंपनी, बस हो गया था. एंड कुछ ऐसा नेटवर्किंग या कुछ नहीं करता था मैं, बहुत कम रहता था वो. तो बट देन दैट वाज द टाइम आई एक्चुअली रियलाइज कि ये जो एटलीस्ट लिंक्डइन में थोड़ा अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन रखना चाहिए था ऑलरेडी. जस्ट एज सिंपल एज सेंडिंग अ कनेक्शन रिक्वेस्ट टू देम, ज्यादा भी कुछ नहीं, ऐसा बात करने का कुछ जरूरत नहीं था. बट देन आई स्टार्टेड सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट टू ऑल द टीम लीड्स ऑफ वेरियस डे कंपनीज. उनको मैसेज करने लगा कि आई एम लुकिंग फॉर फुल टाइम जॉब्स एंड वैसा वैसा. बट हर जगह से सेम रिस्पॉन्स था, सेइंग दैट लाइक ऐसा अभी कुछ ओपनिंग वगैरह है नहीं, सॉरी फ्रेशर्स के लिए तो कुछ ओपनिंग्स नहीं. ड्यू लाइक टू जो ऑलरेडी रिसेशन एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑल है उनको, दीज ऑल थिंग्स. हाँ. यस, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे उनको ले ऑफ किया जा रहा है, तो देयर वाज अ जीरो चांस फॉर मी. सो हाँ. देन बट अगेन लाइक आई वाज लाइक कि ठीक है, जस्ट ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि अगर मैं ट्राई करना छोड़ दूंगा तो फिर पक्का कुछ मिलेगा ही नहीं. तो एटलीस्ट आई जस्ट ट्राई कीप ऑन, कुछ ना कुछ तो होगा ही. सो सेम टू सेम दैट्स. तो मैंने क्रिसिल के एक एसोसिएट डायरेक्टर को भी ऐसे ही मैंने कोल्ड मैसेज किया था. तो उनको मैंने जून में मैसेज किया था, आई एम लुकिंग फॉर इंटर्नशिप वगैरह, बट कुछ रिप्लाई नहीं आया. बहुत से लोगों से कुछ रिप्लाई नहीं आया, बट आई वाज लाइक ठीक है, देख लेंगे बाद में कभी. तो उनका कॉल मुझे अगस्त में आया कि देयर आर ओपनिंग्स हियर, सो आर यू इंटरेस्टेड इन ऐसा. तो लाइक फोन राउंड ओके. वगैरह उन्होंने फोन पे सब इन्फॉर्मेशन पूछ लिया कि क्या करते हो तुम, कैसे क्या था वैसा वैसा. दैट फोन राउंड लास्टेड लाइक अराउंड 40-45 मिनट्स. सो तो लाइक जून में मैंने जो मैसेज किया था वो उसका लाइक फ्रूट मुझे अगस्त में मिला टेक्निकली. अगर मैं जून में बंद कर दिया रहता कि कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं छोड़ मिलता. देते, हाँ. तो प्रॉब्ली मेरे को हाँ कुछ होता ही नहीं था. So that was the moment I would say, like had I given up tabhi, so then maybe I wouldn't be working right now where I'm working. Maybe करेक्ट. I would be doing something else, or maybe I was still looking for jobs. Who knows? हाँ. But I'm glad actually I didn't stop.
माय पेरेंट्स वर सपोर्टिव, दे आर लाइक कि ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं है, क्या ऐसा तो इतना, डोंट बी सो सीरियस, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल एंड ऑल दैट। तो वैसा कुछ प्रेशर भी नहीं था घर से, लकीली। सो एवरीवन वाज जी। डूइंग समथिंग एल्स, आई आल्सो वांटेड टू डू, लाइक मेरे को कुछ ना कुछ करना है ऐसा, घर पे तो नहीं बैठना कंपल्सरी, आई नीड टू डू। हम्म। सो दैट वाज मोर लाइक ड्राइविंग फोर्स फॉर मी, आई वुड से। So that was like a special moment that happened after graduation, and yeah. Because you didn't stop like many of us what we do basically, बहुत बार क्या होता है ना, अपन ट्राई करते रहते हैं, कुछ टाइम बाद वी फील दैट कि अभी कुछ नहीं हो रहा है यार, अभी छोड़ देते हैं। सो वो गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं रखा, तभी अपन को कुछ ना कुछ अच्छा मिल गया, दैट्स व्हाई यू गॉट इट। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। Exactly. एंड वी शुड डू लाइक, अपन को ट्राई करते रहने से तभी होगा। एंड जैसे कि Hmm. आपका एक्सपीरियंस जैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस, कोई ऐसी स्टोरी है या कुछ ऐसा आपके करियर में ऐसा कुछ हुआ हो कि जहां पे आपको ऐसा लगा हो कि अब इसके बाद यार अब मैं क्या करूं, वेयर यू गॉट स्टक बेसिकली इन योर करियर? So it was during my, I would say, third year engineering start May, where a lot of, engineers especially start, like questioning their decisions. बहुत सारे हम्म। लोग इसलिए थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट लेना भी चालू कर देते हैं, इवन दो एक साल में ग्रेजुएट हो जाएंगे, बट स्टिल दे दे डिसाइड टू ड्रॉप ड्रॉप आउट। आउट। हाँ। सो या, सो थर्ड ईयर में भी मेरे को ऐसा थोड़ा क्वेश्चंस, आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ, लाइक एम आई रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम डूइंग, और इज दिस व्हाट आई वांट टू डू, or like I still am yet to find my passion and all that. So I used to discuss all this with my friends, with my dad also, and most of them like just replied, Shashank, you're just 21 years old, 20 years old probably, yeah, 20 years old. You are asking questions like, life end होने आ गया, you don't have to ask this. मेरे को भी ऐसा, like I was kind of stuck. I didn't want to. I was not enjoying computer science. वैसा हो गया था pace. But then eventually, as my third year मैंने complete हो गया, and I did, again, a data engineering internship at one of the startups actually, वो Bangalore based था. हम्म। So, and one of the reasons actually, yes, our decisions, I was stuck with basically like मेरे को कुछ, I was applying for a lot of internships, but I was still not getting it. I got rejected from a lot of companies, JPMC, Barclays, on campus में. So that was a more demotivating factor. Like, why I'm doing this? Like, I had a good profile, सेल्फ but डाउट still होने ऐसा लगता है। हो रहा हम्म। है. Yeah. तो like I'm sure बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ रहेगा जो वीडियो देख रहे हैं. But then वो फेस आ गया था. सो एंड लाइक फिर मई में समर इंटर्नशिप्स चालू होता है, राइट, मेजोरिटी का. तो हम्म। देन एंड लिटरली अप्रैल मिड में मेरे को ऑफर आया, ऑफर लेटर, like 15 days before my exams. I was preparing for an interview. The interview went okay. I was still doubt कि मेरे को मिलेगा कि नहीं. अगर ये भी नहीं मिला तो फिर I'm like doomed. Like एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद से वेकेशन भी चालू हो जाएगा, तो इस समर फिर इंटर्नशिप कुछ नहीं क्या मिलेगा। होगा, कैसे होगा. हाँ। या, सो ऐसा हो गया था, बट आई क्रैक दैट इंटरव्यू, अच्छा गया था. देन द इंटरव्यूअर्स आल्सो लाइक एवरीथिंग. So then just 15 days before the internship was supposed to start, I got the offer letter, and everything was set. And हम्म। those 2 months of my internship were like the best of my life, because I went to Bangalore on site tha wo, and I interacted with a lot of people, and that was the first time for me also, like going out of Mumbai alone. हम्म। अकेले रहना, बहुत सारे लोगों से मिलना, नया नया एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट. सो and again, that point I realized that, अच्छा हुआ ड्रॉप नहीं ले लिया था थर्ड में, थर्ड ईयर में. हाँ हाँ। जस्ट फालतू नहीं की तो। बातें सोचते रहते हैं लोग. हाँ. एट लीस्ट लाइक आफ्टर इंजीनियरिंग इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन करेक्ट। pursue, बट बीच में छोड़ देना इज नॉट एन सोल्यूशन हम्म। कभी भी. इफ यू आर स्टक, and if something is, you can complete within, some time, then you should complete it. बीच में छोड़ने से कुछ point नहीं है तभी. So that's why, I was like, कि अच्छा हुआ I drop off नहीं ले लिया. And anyways, dropping out was out of question. My dad would have scolded me. So then I like, हाँ, yeah, I'm glad कि ऐसा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, maybe. दैट इज, हाँ वो एक बार दिमाग पर लग रहा था कि हाँ भैया अब व्हाट वी शुड डू, एंड नेक्स्ट मोमेंट यू गॉट द इंटर्नशिप, यू केम टू बैंगलोर, डिड द इंटर्नशिप, नाउ यू आर वर्किंग द सेम फील्ड, डेफिनेटली इट इज अ गुड थिंग। हाँ। तो जैसे Yes, कि आप yes, इसमें लाइक इसी फील्ड में काम करो, यू आर वर्किंग इन अ डेटा साइंस फील्ड बेसिकली, इफ वी से इन ब्रॉडली यू आर वर्किंग इन अ डेटा फील्ड। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये डिबेट का टॉपिक है या बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेटा साइंस बेसिकली, कितना हम लोग को मैथ्स जरूरी पड़ रहा होता है, क्या क्या चीजें हम लोग यूज कर रहे होते हैं अगर डेटा साइंस की बात करें तो?
Yes, I agree. Like even a lot of people ask me, data science के लिए maths important है क्या? सब already Hmm. implemented रहते libraries and all that. So I would say maths is definitely important for data science. Like तुम्हें रट्टा मारने का जरूरत नहीं है. At least as you don't have to remember each and every algorithm का mathematics. But जब तुम कुछ सीख रहे हो तो तुम्हें पक्का at least you should be capable of understanding that. It shouldn't be that you started doing some data science project or started doing some data science internship, and in the end you don't even know basic stats या basic distributions Correct. and all that. So हाँ, अभी मेरे कंपनी में भी statistics का बहुत stats is like the base for data science, Hmm. so बहुत बहुत ज्यादा important है maths in my opinion. Hmm. But it's something like conceptually you should know. You don't write maths and implement them in real life. वो सब already किसी ने implement कर किया है already, all you have all Hmm. your libraries and all that. बट वो कैसे अप्लाई करना है, वो इंटरप्रेट कैसे करना है जो आउटपुट आ रहा है, क्या फिर क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो तुम्हें ये सब तभी पता चलेगा जब मैथ्स तुम समझ पा रहे हो. Correct. एंड बहुत बार होता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, या फिर यू फील ओवरवेल्म कि कितने सारे एल्गोरिथम्स है, सबका मैथ्स कैसे समझेगा, वैसा वैसा. Hmm. बट एटलीस्ट तुम बेसिक्स राइट कर लोगे एंड थोड़ा थोड़ा यू गेट acquainted with the concepts, but so then it's easy for you also. It's Hmm. starting with the overwhelming रहेगा because data science is It is something a that new thing. colleges में, या कॉलेजेस में उतना अच्छे से नहीं सिखाते लाइक फॉर योर कंप्यूटर साइंस, बिकॉज वो भी सीख रहे हैं अभी, सबको ऐसे नया चीज है वो. एटलीस्ट कॉलेजेस आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दिस फील्ड. आई एम रियली हैप्पी, Hmm. सो बच्चों पे नहीं छूट गया कि यू फिगर आउट हाउ टू लर्न इट, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग. So just don't rely on college faculty. You can learn it on YouTube. You can learn it on some courses. या फिर Hmm. do some paid courses. It's okay. थोड़ा like you can, it's nothing wrong in spending some bucks on your It course, is I would fine. say. Hmm. Yeah. So as a like, so maths is like very important for it, at least understanding part. And फिर धीरे धीरे वो complicate होते जाता है. But to अगर it's up to you, तुम क्या, because depends कि तुम कौन से प्रोजेक्ट पे काम करते हो, कौन से कंपनी में काम करते हो, Hmm. वैसा बहुत फैक्टर्स रहते हैं. सो Hmm. वो एक्सप्लेन करने के लिए एटलीस्ट यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड इट. तभी Correct. इट्स रियली, तभी तुम समझा पाओगे और तुम्हें समझ में भी आएगा तुम कर क्या रहे हो. वरना Hmm. सिर्फ इंपोर्ट लाइब्रेरीज करते रहोगे तो फिर हाँ. एक ना एक पॉइंट बट यू विल बी स्टक कि क्या कर रहे हो भाई करके. हाँ, फंक्शनिंग अपन को पता होना चाहिए बिकॉज लाइक इफ डेटा इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू आर यूजिंग अ रिग्रेशन मॉडल, सो व्हाई यू आर यूजिंग अ रिग्रेशन मॉडल, यू शुड नो बिहाइंड द सीन्स कि क्या ऐसा होगा. रिग्रेशन मॉडल अगर मैं यूज करूंगा इस मॉडल को, अगर इस मशीन को, अगर इस मॉडल को ट्रेन करूंगा बेसिकली इस डेटा पे रिग्रेशन मॉडल को यूज करके, तो क्या होगा. वो सारी चीजों का बेसिक जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ डे टू डे, लाइक डेली यू आर वर्किंग ऑन दिस फील्ड, so there might be some tools ki day to day that you might be using in your work. So what are the mandatory tools to work in data science? अगर मैं बात करूं, कोई ऐसे टूल्स होंगे जो मैंडेटरी होंगे, तो वो ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं? So I would say, the tools that I regularly use, Python, of course. And हम्म. Python के अंदर you have all your libraries also, your sklearn, your अगर दूसरा Seaborn, Matplotlib, other visualization tools. So most of them I use it for my own convenience. It's हम्म. not something that I have to showcase it to clients or anything like that. It's something that I use for my own understanding. I use for my own implementation. हम्म. But if you're asking for something that is specific, then for some of the general tools is Power BI, Tableau for data visualization. Then हम्म. all your ML libraries such as sklearn या फिर TensorFlow, Keras, depending on the company again, the company हम्म. क्या prefer करती है. But at least you should be acquainted. एक ना एक प्रोजेक्ट तो किया रहना चाहिए इसमें, तुम्हें खुद को एटलीस्ट समझ में आता है कि ओके ये ऐसा इम्प्लीमेंट करना है, बेसिक्स. सो Correct. for all your deep learning and ML stuff. And data engineering के लिए again like SQL is very important for to fetch the data from your databases, फिर उसको modify करना वैसा. So वैसा data engineering का मुझे उतना आइडिया नहीं है because data engineering में भी again बहुत सारे divisions होते हैं such as extraction, then हम्म. convert, transformation ट्रांसफॉर्मेशन. and loading वो हम्म. सब. हम्म. Yes, yes. So depending हाँ. again on the specific part, like you have again your dedicated tools as such. Correct, correct. Because data engineering is totally different and data science is Totally totally different. different. Data engineering comes, I think, in starting off the process, like when you are building a data warehouse, Awesome. at that time it comes. And data science is when the all the everything is built. Now on top of that, you are building the models, you are training the models, you are predicting the like predicting the things.
फॉर द बिजनेस डिसीजन, तो उस समय आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें डिफरेंस होती yes, है, yes. छोटे छोटे डिफरेंस है। और जैसे कि देर आर सो मेनी टेक्निकल स्किल्स दैट इफ यू वांट टू बिकम अ लाइक गुड डेटा साइंटिस्ट, देर आर सो मेनी टेक्निकल स्किल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देर माइट बी सम कुछ नॉन टेक स्किल्स होंगी जो आपको लगता होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर एक बंदे को अच्छा डेटा साइंस इंजीनियर मतलब डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो देर माइट बी सम नॉन टेक स्किल्स। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हैं वो? Yes, so data scientist has some, or who, data scientist is a person जो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स में एक्सेल नहीं करता बट नॉन टेक स्किल्स में भी एक्सेल करता है. बेसिक स्किल्स आर नॉट इनफ बट यू शुड बी गुड, वेरी गुड ऑन दोस. बिकॉज व्हेन यू आर डेटा साइंटिस्ट यू फेस यू फेस द क्लाइंट्स, तुम बहुत सारे टीम्स के साथ काम करते हो. तो फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स. यू शुड बी क्लियर कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, एंड ऑल दैट, हाउ, व्हाई, व्हाट वाला पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. And secondly, I would say presentation skills also, because when you're developing a solution, and tomorrow usually you present your solutions to usually a non-tech person, usually the upper हम्म। management or your client or your team, जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं रहेगा टेक्निकल स्किल्स क्या हो रहा है. तो तुम्हें usually you should figure out, okay, this is something that this is not relevant to the solution. More so interpretation is relevant. So तुम्हें पता रहना चाहिए, how to present your output, how to interpret your output to हम्म। non-technical people simply. So करेक्ट। if this is the simple solution for this is just try to imagine that you are explaining a solution to some 10-year-old kid. तो उसको कैसे समझाओगे तुम कि ओके ये ऐसा जा रहा है. तो just try to work on such work like that. हम्म। And thirdly is more like interpersonal skills, like as I said, because तुम करेक्ट। अलग अलग हाँ। टीम्स के साथ काम करते हो तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. हाँ, वो बहुत So ज्यादा these मैटर are करता usually है। the non. हाँ। Hmm. और जैसे कि लाइक वी हैव सीन द राइज ऑफ एआई, लाइक इन लास्ट ईयर आल्सो वी सॉ चैट जीपीटी केम इन एंड बहुत ढेर सारे इफेक्ट्स वो छोड़ के गया। सो व्हाट वाज योर इफेक्ट लाइक इन योर एक्सपीरियंस, हाउ इट हैज बीन? बिकॉज सो मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग इन कि डेटा साइंटिस्ट का रोल खत्म हो गया, इसका रोल खत्म हो गया, अब तो चैट जीपीटी आ चुका है। सो अभी आपके एक्सपीरियंस में कैसा रहा चीज एंड कैसे वो हेल्प आउट किया आपको? Okay, so ChatGPT मैं थोड़ा कम यूज करता हूँ, because a lot of time what happened is whenever I use ChatGPT वो एक solution propose करता है, and वो मेरे केस में तो like most of the time it gave out some wrong solutions, और वैसा वो हम्म। implementation नहीं हो रहा था, because like the way ChatGPT was trained was on public data, and publicly बहुत कुछ भी पूछते, questions कुछ भी रहता है, solutions कुछ भी रहता है and all that. हम्म। So I'm not saying that ChatGPT is not a great tool. It is definitely great. So मुझे यूजुअली कैसे हेल्प आउट होता है कि if I forget some syntax, or or some basic code, or like how to interpret this code, how to basically interpret this piece of research paper. So that वो cases में मेरे को ChatGPT बहुत help किया actually. हम्म। It actually helped me a lot, understanding something that I couldn't. Or अगर even if I tried to understand on my own, it would have taken me days. But because of ChatGPT, it actually helped me to understand stuff within 1 hour, 1.5 hour, I would say. बहुत जल्दी हो गया था. And it made it things smooth. So but ChatGPT is a tool which will definitely not replace you, even if it's करेक्ट। ChatGPT 4 or ChatGPT 5, anything. हम्म। It's something that will ease your job, but you can't be 100% rely on it. You just have to take some thoda inputs from it. That's it. I would say करेक्ट। that करेक्ट। that would be more than enough. हाँ, वी कैन लेवरेज इट लाइक बिकॉज अपन के पास क्या है ना, लाइक देर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग इन। अगर मान लो कोई चीज मेरे को नहीं आ रही है, आई कैन जस्ट टाइप इन देयर एंड मैं जल्दी से समझ, जैसे आपने कहा कि हाँ, इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इजली, मतलब जल्दी मैं सीख जाता हूँ चीजों को। तो वैसे करके अपन यूज कर Actually, सकते हैं एंड द वर्क ऑल्सो वी कैन यूज इट जस्ट टू ईज द थिंग्स। अपन को रिप्लेस नहीं करना ease है, this. हाँ, ईज कर देते हैं चीजों Replace. को। हाँ, यस, अभी वो रिसेंट चीज में है। कैसा हुआ था, बिकॉज अभी थोड़ा रिसर्च करना था एक मेथोडोलॉजी पे. सो मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स रेफर किए थे उसके लिए कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. बट यूजुअली रिसर्च पेपर्स वो लोग जो भी लिखते हैं वो ऐसे वो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि इसको जो भी पढ़ेगा उसको समझ समझ जाएगा. जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही नहीं है वो. हम्म। इट्स यूजुअली कॉलेज किड्स के लिए वो अच्छी चीज रहता है, जो आर एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स, या फिर करेक्ट। रिसर्च करेक्ट। टीम्स जो हैव गुड पीएचडीज और एनीथिंग. But someone like us who are in a like a normal role, they struggle a bit. So in such cases ChatGPT has helped me out, कि हाँ, okay, मेरे को ये इंटरप्रेट करना है, ये फॉर्मूला इंटरप्रेट करना है, या फिर ये पैराग्राफ इंटरप्रेट करना है, क्या बोल रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा हम्म। है. तो वो केसेस में मेरे को ChatGPT ने एक्चुअली बहुत ईज कर दिया, कि बोल रहा कि ओके ऐसा ऐसा. आई आस्क्ड ChatGPT एग्जांपल्स बताओ मुझे ऐसा, देन इट एक्चुअली हेल्प मी आउट. हम्म। So
something that you would ask Google, okay, this is what is optimization algorithm, for example. तो गूगल में तुम्हें 100 आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो चैट जीपीटी तुम्हें क्रिस्प आंसर दे देता है, ओके क्रिस्प ये चीज चीज है। है क्या ऑप्टिमाइजेशन algorithm। हाँ। हाँ। तो देन इट स्मूथन्स आउट, ओके मेरे को अभी 100 जगह सर्च करके टाइम ऐसा पढ़ने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम एक आई जगह रियलाइज कि सर्च अरे ये तो करके, कुछ हाँ, समझ में नहीं आया। हाँ। अपना टाइम तो बहुत सेव हो ये जाता स्मूथ है। हो गया था। और जैसे कि लाइक अगर आपके डे टू डे लाइफ की बात करें, हाउ योर डे इन अ लाइफ लुक्स लाइक। So usually, like my office starts around 10:30 के आसपास, and my work is also like office also hybrid. So like weekly 3 days I have to go to office and 2 days is work from home वैसा। So it takes around 1 hour to reach my office. Then usually like the first thing that we do is technically just discuss. I and my teammate discuss what is the progress or am I stuck in something पूरे दिन में, like कल कुछ stuck हुआ था, या फिर if there is something अगर कोई research phase चल रहा है तो फिर क्या कुछ research नया phase मिला क्या, या फिर कुछ हम्म। implementation में problem हुआ क्या, we discuss that. And after discussing updates, then we just discuss, okay, abhi, what are the further tasks to be done, and then I start working on it, okay, and then try completing them as soon as possible. And पूरे दिन यही चलता ओके ओके, दैट्स ग्रेट। एंड जैसे कि लाइक मैं एक चीज गारंटी से बोल सकता हूँ, लाइक व्हेन वी आर इन द कॉलेज, वी डेफिनेटली एक्सप्लोर सो मेनी फील्ड्स। अपन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ट्राई आउट करते हैं, जो कॉमन फील्ड्स होती हैं, जैसे डेवलपमेंट की फील्ड्स हो गई, और भी ढेर ढेर सारी फील्ड्स होती है जो कॉमन होती हैं, वो हम लोग डेफिनेटली ट्राई आउट करते हैं। तो आपके है। लाइक व्हेन यू वर स्टार्टिंग योर करियर, तो आपने भी डेफिनेटली ये चीज की होगी। उसके बाद फिर आपने देखा होगा और भी फील्ड्स एक्सप्लोर की होगी। तो जब इसमें आया तो आपको कब रियलाइज हुआ कि दिस इज द फील्ड फॉर मी, दिस इज द बेस्ट सूट फॉर मी। तो ये एक्चुअली हुआ कब, अराउंड माय सेकेंड ईयर के स्टार्ट में आई वुड से, या फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट एंडिंग एंडिंग में। सो तभी लाइक लॉकडाउन चालू हो गया था, एंड वी ऑल वर लाइक लाइक वी आर लाइक फ्री बर्ड्स, हम लोग को ऐसा लग रहा था कि अभी हम्म। जो चाहिए कर सकते हैं, हम कोई रुकने के कुछ लिए भी नहीं कर है, कुछ सकते हैं, कॉलेज सब प्रेशर खाली। नहीं है। हाँ। So I like a lot of my friends were doing some courses on Coursera, तो मैंने भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स चालू किया था। सो मेरे को लाइक बीच में उतना इंटरेस्ट आ तो नहीं रहा था, बट आई वाज स्टिल लाइक एक आधा कोर्स कर लिया तो फिर पूरा कोर्स कर ही लेते हैं, हम्म। मे बी एंड में कुछ इंटरेस्ट आ जाए। मैं ऑल माय फ्रेंड्स वर डूइंग वेब डेवलपमेंट कोर्स ओनली, तो मैंने भी वही किया कि मेरे को कुछ आइडिया तो था नहीं टेक में क्या करना हम्म। चाहिए। सो मतलब एक एक कोर्स एक्सप्लोर करते भाई क्या जाता। So तभी मैंने I took out a web development का course on Coursera only, and so I started with front end development, and I realized that personally for me, like it was a very monotonous job because I spent a lot of time just deciding क्या color रहना चाहिए, किधर ये rectangle रहना चाहिए या circle रहना चाहिए। तो मेरे को realize हुआ कि this is not for me, this is something जो you can take quick decisions कि okay ये रहना चाहिए ये रहना चाहिए। मैं हम्म। बस ऐसा घूमता रहूंगा एक चीज में। तो देन कोर्स कंप्लीट हो गया, एंड आई लाइक आई काइंड ऑफ फेड अप कि अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, टेक्निकल फील्ड में जाना ही नहीं है। वैसा वैसा हालत हो गया था। Then my one of my friends suggested, he was doing some data science course also, so he suggested me ओके। कि तू भी data science course try कर, maybe it will help you realize कि तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं। I was also like ठीक है देख लेते हैं। तो हम्म। देन मशीन लर्निंग में लाइक एंड्रो एनजी का कोर्स रहता है कोर्सेरा में, लाइक जो भी ओके। डेटा साइंस स्टार्ट करते हैं यूजुअली उनके कोर्स से चालू करते हैं। मैंने भी हम्म। वही किया फिर। तो I would say, like, वो actually वो प्रोफेसर की वजह से मेरे को इस कोर्स में इंटरेस्ट आया, the way he explained the concepts and with the way he smooth ऐसा he eased out कैसा होता है क्या, like ML algorithm कैसा काम करता है, क्या वो क्या होता है बैकएंड पूरा ऐसा मैथ्स वगैरह वगैरह। So हम्म। that's when I realized that okay, this is something interesting because मेरे को like differentiation matrices इन सब में 12th standard से इंटरेस्ट था, I was interested in this field. सो और थोड़ा डीप में देखते हैं क्या रहता है ये वैसा। फिर मशीन लर्निंग होने के बाद आई आई स्टार्टेड डूइंग, आई थॉट एक प्रोजेक्ट करके देखते हैं। तब मैंने जब प्रोजेक्ट किया तो देन आई रियलाइज दैट कि सिर्फ मशीन लर्निंग सीखना इज नॉट इनफ। उसमें हम्म। डेटा प्री प्रोसेसिंग रहता है, डेटा कन्वर्जन रहता है, लाइक अगर तुम्हें डेटा मिसिंग है तो कैसे करना है, उस बहुत कुछ रहता है। तो तब मेरे को लगा कि अरे ये सब तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। सो ये सब कैसे करते करके। so like luckily like I had a very good professor in college also who was into this field, and मैंने उनसे बात किया कि कि ऐसा ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वही सेड कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स तो रहता नहीं है कि ऐसा सब कवर हो जाता है। वो यूजुअली हाँ, प्रोजेक्ट्स कर करके तुम सीखते हो कि ओके ऐसा अप्रोच रहता है, ऐसा इट इज, अप्रोच रहता हाँ, है, हिट एंड ट्राई प्रैक्टिस करना रहता बेस्ड, है। हाँ। या तो ऐसा होता है।
तो देन आई वाज मोर लाइक अरे क्या वापस प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो ऐसा कुछ थियरी भी रहना चाहिए ना कि ओके ये अप्रोच फॉलो करना है, सब खुद से ऐसा हिट एंड ट्रायल से मुझे नहीं करना करके। हाँ हाँ तो देन मैंने छोड़ छोड़ दिया प्रोजेक्ट, एक्चुअली करना नहीं था। फिर मैंने थोड़ा वापस सोचा डीप लर्निंग थियरी सीखते हैं, नॉट नॉट जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू प्रोडक्ट्स। तो देन मेरे को डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस वगैरह मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हाउ यू आर रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस एंड ऑल दैट। सो वो भी प्योर मैथ्स था, तो मेरे को वापस बहुत इंटरेस्ट आ गया उसमें। So that's when I realized that कि सिर्फ थियरी करने से अभी कुछ फायदा नहीं है, I should actually start doing some projects. So then I started reading a lot of projects on Kaggle. So ओके this might be like, I'm sure this must be something weird that a lot of people think that projects, why are you reading projects? But actually that helped me out to understand approach कि बाकी सब कैसा अप्रोच फॉलो कैसे कर कर रहे रहे हैं, हैं। उनके सॉल्यूशन से क्या फायदा हुआ। तो हम्म, एंटी तुम बाकी लोग का अप्रोच नहीं देखोगे, तुम्हें खुद को ही समझेगा कि ओके ये अप्रोच भी एग्जिस्ट करता है क्या। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। अब मेरे को बहुत फिर इंटरेस्टिंग लगने लगा, ओके ये डेटा को ऐसे मॉडिफाई करने से ऐसा कुछ हो सकता है, और डेटा ऐसा भी मॉडिफाई होता है क्या। सो दैट एक्चुअली मेरे को फिर और इंटरेस्ट आने लगा इस फील्ड में। फिर मैं एमएल में उतना क्यों गया नहीं, फिर मैं फिर थोड़ा डेटा प्री प्रोसेसिंग करने लगा वैसा वैसा। फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग सीखने के बाद मेरे को फिर वापस पता चला कि डेटा अलग अलग सोर्सेज से आता है, जो रियल लाइफ में होता है इट इज नॉट नेवर अ प्योर सीएसवी फाइल। तुम्हें हाँ 10,000 सोर्सेज से डेटा आता रहता है, तुमको उसको मॉडिफाई करना। So that's when I like that is basically your data engineering. I start transform and load. So I like कि oh बाप रे, data pre-processing के पहले एक और step होता है। So then मेरे को फिर वापस data engineering, ऐसा like as I mentioned data engineering concept था, like internship चल रहा था मेरा बैंगलोर में। So अलग अलग then I had to modify data, फिर clean करना था data and all that. So वो internship के बाद मेरे को like I realized that the impact that I could create in this field, especially because first मेरे को personally interest भी था, and secondly सारी कंपनी अभी डेटा फील्ड डेटा बन ही रहे, like irrespective of the domain there is some of the other data involved, and it is actually helping companies take some better decisions. It is like improving the lives of people. So that's where I realized that कि like मैंने बहुत कुछ सीखा है अभी, like बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हम्म internships वगैरह किया है, and I realized that yes I'm actually interested in this field। मेरे को अभी इसमें ही करना है। The impact that I could create, basically the momentum of the impact. So that's when I realized that अगर मैं कोई और फील्ड में रहता तो maybe I would have, but I don't know, but I'm sure कि ये फील्ड में तो I will definitely दिस इज I'll get बेटर to फॉर learn यू। a lot and I'll get to contribute a lot basically. उसके बाद जैसे कि आपने जैसे मेंशन किया स्टार्टिंग में दैट यू फेस्ड सो मेनी इंटरव्यूज। सो बेसिकली इंटरव्यूज की अगर हम बात करें, सो डेटा साइंस में अगर कुछ हम लोग ऐसे जनरल चीजें पूछ लें कि हाँ क्या क्या चीजें एकदम पूछी जाती हैं कि हाँ मैंडेटरी एक इंटरव्यूज में पूछा ही जाएगा। सो व्हाट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन द इंटरव्यूज। So usually internships तो like chill ही रहता है if you are applying for any company. MNCs वगैरह they have, of course they have a structured way of asking questions, but अगर startup है तो they are more flexible. So MNCs they have a set of, first you have your online assessment round कि like basic DSA, at least basic DSA तो आना चाहिए। Easy questions I would say, easy to medium questions, you should be able to solve those। And then you have your depending again, you are applying for, they are applying for data engineering role, then accordingly क्या concepts होते हैं उसमें वो। If you are applying for machine learning role, then अलग अलग algorithms के बारे में पूछते हैं। So the whole point of the whole point of asking all these questions is technically कि तुम जो रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट तुमने ये सब तो सुना रहेगा, ये सब समझा रहेगा, ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह। It doesn't mean that तुम ये सब अप्लाई करोगे कंपनी में, मे बी दे हैव देयर ओन proprietary algorithm that, but the whole point they want to know, the whole point of asking such questions is you should be aware कि अवेयर क्या हो रहा नॉलेज है, होना चाहिए LSTM चीजों का। model is supposed। Yes, so like you are calling yourself a data scientist, that you should be aware of these algorithms। हम्म So and so these are for MNCs। So अगर स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर टेक्निकली स्टार्टअप्स आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट यू एज अ पर्सन अलोंग विद योर नॉलेज आल्सो, बिकॉज वर्क हैवी रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे टीम के साथ ही रहते हो, एंड चैलेंजेस भी बहुत सारे रहते हैं। सो एमएनसीज दे हैव देयर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे। उधर इतना वर्क प्रेशर रहता है डेफिनेटली, बट इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, दे यस हैव रिस्क मिटिगेशन मेजर्स, एवरीथिंग। So startups usually what they focus is, what I have observed in my interviews and all that, they definitely want you to have some basic knowledge, but at the same time they also want to understand how you answer some non-tech questions, like as simple as tell me about yourself a question,
or why do हम्म you want to join the company, or explain the impact of the project that you created. So I have seen a lot of people, first like बहुत monotonous answer देते हैं. Why do you want to join the company? It's like they just do some 2 3 lines about that particular company and then just they. So I made sure that कि I would not make such mistake. So one of the interviews actually I DSA round में पूछा था, live coding था मेरा. And I messed up because I was personally not interested in DSA. मैंने उतना practice भी नहीं किया था कभी, and मेरे को like DSA was one of the main reason I started hating coding also कि ये क्या है, ये सब इतना टफ हो जाता है, क्यों करना है ये सब ऐसा ऐसा. बट धीरे धीरे मेरे को लाइक इंटरेस्ट आ गया. उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था डीएसए में, बट इट वाज स्टिल लाइक मैनेजेबल. इट्स ओके, आई कैन डू दैट, वैसा it था. तो बट जब लाइव कोडिंग का टाइम आया था, एंड उसके पहले मैंने कभी कुछ मॉक इंटरव्यू ऐसा दिया नहीं था, लाइव कोडिंग मेरा हुआ नहीं था. मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अबाउट माय प्रोजेक्ट्स एंड जस्ट बेसिक पाइथन नॉलेज वैसा था. So जब लाइव कोडिंग हुआ था, it was he gave me a problem statement, he asked me to solve it. So मैंने प्रॉब्लम पढ़ा भी था, मेरे को उसका सोल्यूशन मैंने भी देखा था, लाइक I solved it a long time ago. So I forgot about the solution. I was like कि कैसे सॉल्व करना है इसको. तो and that was, as I mentioned, वो बेंगलोर वाला इंटर्नशिप जो it was a make or break moment for my life. So what I did is technically, I tried to solve some basic code, at least एक टेस्ट केस पास हो जाए या फिर कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए relevant थोड़ा, something like that. But my manager, like the interviewer, he was like kind of chill and kind of friendly, and most of the interviewers usually are. He simply said, "Hey, Shashank, no, this is not how we do it. Just take this is the hint." ऐसा उन्होंने hint दिया. तो मैंने वो hint को थोड़ा अप्लाई किया वैसा थोड़ा. I realized that अभी कोड तो सॉल्व होने नहीं वाला. मैंने सिंपली आई विल टेल माय प्रॉब्लम अप्रोच कि मैं कैसे अप्रोच करूंगा एंड क्यों हम्म कैसे कैसे. कोड बाद में देख लेंगे, लाइक इट्स अप टू हिम. अभी हो नहीं रहा है, एटलीस्ट आई शुड शेयर माय अप्रोच, माय थिंकिंग प्रोसेस कि मैं कैसे अप्रोच करता इफ आई वाज गुड एट डीएसए. सो हम्म मैंने वो शेयर किया, एंड ही वाज लाइक अच्छा अच्छा ओके ओके हो गया. फिर देन ही आस्क्ड सम बेसिक सीक्वल क्वेश्चंस एंड बेसिक पाइथन क्वेश्चंस ऑन नोटपैड, लाइक देयर वाज नो इंटरफेस और एनीथिंग. सो मेरे को मालूम भी नहीं पड़ रहा था कि मैं जो लिख रहा था वो सही बराबर है। था या फिर रेड हेडलाइन आ जाता यूजुअली. हाँ हाँ हाँ। सो हाँ, सो लाइक कि ठीक है हो गया. And then he asked me like all non-technical questions also. Why do you want to join this company, or why do technically like tell me about yourself, all these questions. So at least I made sure that I don't mess up these questions because I was genuinely interested in that company. Secondly, I was genuinely interested in that particular field. So मैंने उनको बोला कि this is the field that I wanted to work, वैसा वैसा सब कुछ, why I genuinely want to work. So ये सब सुन के then I was kind of confused कि interview अच्छा गया कि नहीं, because I didn't know. Because DSA क्वेश्चन अच्छा नहीं गया था, बाकी सारे क्वेश्चंस ओके अच्छे थे ऐसा. बट देन लकीली अगले दिन मेरे को कॉल आ गया कि हम्म yes, Shashank, you are selected. We are lucky to have you. ऐसा. So that's when I realized, like when you are giving your interview, you should have basic knowledge definitely, but it doesn't matter if you are exam smart or exam. All they want to see is how enthusiastic you are to learn, or how enthusiastic you are to like contribute to the company. So they like companies are interested in like checking how much interested are you, and of course how much contribute, how much you want to contribute, not even how कंट्रीब्यूट much you हाँ। can, how much you want to. हम्म So that is more like tip for हम्म। cracking interviews. तो ऐसा कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो आपका फेवरेट है? एक होता है ना कि हाँ कि ये इज द दिस इज द गो टू एल्गोरिदम फॉर मी। Yes, simple regression is my favorite because first तुम easily किसी को भी explain कर सकते हो क्या होता है, हम्म because कोई black box model हो, for example your random forest, or for your SVM या SVR or any neural network, most of the times you are not able to explain it to your clients or explain it to anyone else, not just clients. And usually interpretability या explainability को ज़्यादा preference दिया जाता है as compared to like predictability. So हम्म it now like I started working with this particular algorithm that I was like पहले regression ही लगा देते हैं, then we will figure out कि अगर अच्छा accuracy नहीं आया तो बाद में देख लेंगे क्या करना है. But that is more like something that is easy to explain, and everyone prefers that particular algo as compared to others. so I think we have covered everything. So this is the last one, that is because most of the people who are watching this video might be an enthusiast who want to get into this field, या वो स्विच करना चाह रहे होंगे डिफरेंट फील्ड में और स्विच करना चाह रहे होंगे. तो उनके लिए आप क्या ऐसा इंसाइट्स देना चाहोगे, टिप्स देना चाहोगे कि हाँ उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सके?
So simple tip is first, तुम अपना स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ लो, जो बेसिक्स आउट से यूट्यूब में अलग अलग प्लेलिस्ट है वो कर सकते हो, ऐसे कि नहीं जॉइन सम कोर्स, लाइक अगर if you can afford it then well and good, but if you can't then of course there are a lot of free videos on YouTube. But recently I would say suggest course is better because तुम्हें बहुत सारा practice materials भी रहेगा, and it is more consistent, more organized as compared to your unscattered, like a scattered playlist. So I would suggest first statistics तो important है, वो अच्छे से समझ लेना कि कैसा normal distributions रहता है, या फिर what are your hypothesis testing methods and वो सब. And उसके बाद Python coding language you should at least know the basics. Like as simple as your for how does the for loop work, or how does your list works, yeah, data frame knows वो सब. And उसके बाद like these two are like more than enough. And उसके बाद सब machine learning का maths, all your algorithms, how do they work, yeah, how to interpret them वो सब. So once you are good with all these, then you can start building some projects. And definitely you will be stuck. I'm not saying that ये कर लिया तो you will be expert, या फिर you will इश्यूज know तो आएंगे। everything, but issues तो आएंगे ही. The only solution for this is that you shouldn't stop. That's it. You should करेक्ट। go keep on going. हाँ, एंड अगर एक टाइम के बाद इफ यू फील दैट कि और आगे नहीं जा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट स्टॉप दैट प्रोजेक्ट, कुछ और नया प्रोजेक्ट कर लो या कुछ नया सीख लो, मे बी समथिंग लाइक दैट. यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द प्रोजेक्ट दैट यू लव. मैंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बीच में छोड़ दिया था, कुछ और चालू कर दिया, फिर बाद में मेरे को और एक्सपोजर मिला और रियलाइजेशन आया क्योंकि ऐसा भी होता है. देन आई केम बैक टू द प्रोजेक्ट एंड ओके ये ऐसा वो कर सकते हैं, ऐसा ऐसा. So don't give up, and I would say chill ho jao thoda and don't stress out, because data science is definitely overwhelming, especially if you are a fresher in this field. If you are experienced, then you already know the picture. But I would just say chill out. Do courses, learn, yeah, whatever you like. That's it. It's more than enough. You should be interested. That's it. हाँ, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। अपन ट्राई आउट बाकी करते रहेंगे, सो वील गेट इनटू द शेप कि हाँ कैसे दिखता है पिक्चर, क्या क्या चीजें पर हम करने की जरूरत है, वो रोड मैप अपने आप फिर आने लगता है। सो दैट इज Yes, exactly. हाँ, so thank you so much, Shashank, for coming up and sharing everything. I think we have discussed everything, starting from your journey, what all issues you faced, what all things you faced. Definitely, people who are watching this video, उनको 100% वो चीजें समझ में आएंगी कि वो चीजें नहीं करनी है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो जो चीजें आपने फेस की, उससे काफी कुछ सीखने को, काफी इंसाइट्स मिले होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग एवरीथिंग। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। Thank you, Anurag, for giving me this opportunity. It was great sharing my experience with everyone.